जी गाइस, तो अगले व्लॉग का हमारा शुरुआत होता है यहाँ से। ये मेन चौक है, जैसे कि ग्रैंड बाज़ार इसके साथ है, और ये मेन चौक है। इससे आगे इस साइड पे ब्लू मस्जिद और सुल्तानahmet स्ट्रीट के सारे जो है ना वॉकिंग डिस्टेंस पे आगे इस तरफ आप आगे जाए तो सुल्तानahmet स्ट्रीट, ब्लू मस्जिद, और वो बिल्कुल सामने जो है ना गली के अंदर सामने जो गली अंदर जा रही है वहाँ पे ग्रैंड बाज़ार। और इसी तरह ये भी आगे सारे जो है ना जितने टूरिस्ट लोग घूमने आते हैं, जो यहाँ पे मुकामी यहाँ पे जो तारीखी मुकाम है उनको देखने के लिए, वो सारा यहाँ पे करीब में है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो अभी हमारा इफ्तिताह इस तरफ हो रहा है ब्लू मार्क्स मस्जिद की तरफ, और हमने जाके वो आपको विज़िट कराना है। ये रोड जा रहा है सीधा आगे, ये मेट्रो का ट्रैक है। और यहाँ पे मज़े की बात आपको बताऊँ, जो मेट्रो है वो बिजली से चलती है। ये ऊपर आपको तारे नज़र आ रही है, इसके साथ कनेक्टेड होती है, वो मेट्रो आ रही है। अभी मैं आपको बताता हूँ, वो देख ले, मेट्रो से ऊपर निकला हुआ है, ये चेक करें। ये जो है ना बिजली से चल रही है मेट्रो, आप देख सकते हैं। मेट्रो सारी बिजली से, कोई पेट्रोल नहीं, कोई डीजल नहीं। फिर दूसरा मेट्रो आ गया, ये देखें, ऊपर चेक कर, ये दो तारे गई हुई है ना, इसके साथ कनेक्टेड है, वो चेक कर लें। मेट्रो भी बिजली से चल रही है, ये देखें, ये मज़ा है यहाँ पे, ये चेक करें गाइस। दूसरी मेट्रो आ गई है, तीसरी मेट्रो आ गई। जी गाइस, हम दोनों ये पे बैठ गए पार्क में, छोटा सा पार्क बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और सुबह 10 बजे के हम निकले हैं, बहुत ज़्यादा हम थक चुके हैं। हाँ, तो है भाई, बहुत ज़्यादा घूमने का शौक हो, घूमने का जुनून हो, एक्सप्लोर करने का जुनून हो, नए नए लोग, खूबसूरती देखने का, फिर आपको थकावट तो महसूस ही नहीं, मुझे तो महसूस ही नहीं हुई, लेकिन बारली ने मुझे याद दिलाया कि भाई बैठ जा, फिर 10 घंटे घूमना करना है। 3 घंटे हो गए लगातार हम घूम रहे, 3 घंटे हो गए। और 3 घंटों में आप ये समझ लें कि हमने सिर्फ अभी ग्रैंड बाजार का सिर्फ देखे। और ये लोग जो ये वाला बन रहा है जिसमें हम बातें कर रहे हैं, ये ग्रैंड बाजार की तरफ से हमारे सूफी और ब्लू मॉस्क की तरफ आ रहे हैं। ये उस भी लोग का हिस्सा है, और दोनों मॉस्क करीब है। कोई टैक्सियां करने की जरूरत नहीं। जब भी आप इस्तांबुल आए तो एक ही रोड, एक जगह आप उतरेंगे ना, मिसाल के तौर पे कभी कई जो रेलवे स्टेशन है, मेट्रो, वहाँ उतरेंगे, वहाँ से एक ही रोड सुल्तानahmet स्ट्रीट वगैरह जो एक ही तरफ पड़ते हैं, और इसी सारा सब मवाद पैदल जा सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं, पैदल सब विजिट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका स्टेमिना होना जरूरी है, और आपका स्टेमिना जरूरी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं, यहाँ से उठ के हम जाएंगे सोफिया में और ब्लू मास्क में। तो आगे जाके आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि आगे हमें क्या क्या देखना है। की तरफ